all members, welcome to Bipolar CP Study Circle meeting, and welcome Pradeep Bhai, Vinita Bin, for for accepting our invitation and coming over here for this meeting on insolvency professionals and of professional opportunities for chartered accountants. We look forward to this new field. Thank you, sir. And as a formal introduction, I would request our deputy convener. Yeah, Abdul Hussain bhai. Yeah. Acha, before we introduce, just an announcement to members. We'll be sending an email invitation to all those who want to be a part of the committee for the next year. So we'll be sending that email invite. So we look forward to more participation in the committee for organizing all these events, and a formal email will be followed. Yeah. So over to you, Abdul Hussain. Thanks. Yeah. Good evening, everyone. We today have very learned speakers all the way from Surat, Gujarat. It's a couple of husband and wife who has been into the profession and better in the insolvency profession since quite some time. And as a formal, I'll just read out the basic introduction for you guys. So first, ladies first, Miss CA is a IP insolvency professional for Vinita Maheshwari. She is a fellow member of Chartered Accountant, and she has been a rank holder all the way. Qualified, certified in international IFRS. Then she holds a DISA certificate. She has a postgraduate diploma from Symbiosis College in Pune. She is a MCOM from MDS University, Ajmer. She is a member of IBC committee of WIRC. She has co-authored the book of Unlocking Personal Guarantee Provisions under IBC for Effective Recovery for Banks and in Financial Institutions. She is a partner of JLNUS and Company. She is a non-executive director of Financial Institute NBFC. She has delivered various lectures in CPA conferences and on topics like insolvency, project finance, bank branch audit, IFRS convergence, etc. She has delivered motivational lectures at various platforms, especially for students. Contributed in IBC portion of WIRC. 25th anniversary celebration they did. So they kept a dress code. I request all the members to please mute themselves. She is a life member of ISKCON and handled multiple IBC cases involving around 4,000 crore of asset portfolio under insolvency regime. And Mr. Pradeep Kabra, he is also an insolvency professional, fellow member of Institute of Chartered Accountants. He has done a diploma in IFRS. He has done a diploma in ISA, certified course in concurrent auditor, DMP from completed DMP from Wellington Institute of Management. He was also a co-author of the book Unlocking Personal Guarantee Provisions under IBC for Effective Recovery for Banks and Financial Institutions. He is also a non-executive director in NBFCs. He is presently member of Managing Committee of Surat Branch. He is also partner of JLNUS and Company. He is a director in Competent Insolvency Professionals Private Limited, which is a company registered with ROC and IIPI, registered as Insolvency Professional Entity. Presently a team member of Central Statutory Audit of IDBI and member of Southern Gujarat Chamber of Commerce and has served at the core committee like treasurer for Surat Jilla, Maheshwari Sabha, Shikha Mantri, Mewar, Maheshwari Samaj, etc. He has served as a member of PR Committee of Western Regional Council. He is a member in Career Counseling Task Force of Surat Branch. He is a member of CPE Committee of Surat Branch. And he has delivered lectures on various topics like insolvency, project finance, branch audit. He has delivered motivational lectures on various platforms, and he is also a life member of ISKCON. I think so that is a sufficient this thing, and I don't want to take more time, and I'll hand it over to Mr. Vineet and Mrs. Vinita, Mr. Pradeep and Mrs. Vinita to take over from here. Thank you so much, Abdul Hussain ji, Ratlamwala, Deputy Convener.
Thank you to Convener Murtaza ji for giving us this opportunity to interact with my professional colleagues and seniors in the profession. And regarding Mumbai, as we discussed that मेरा स्टडी भी मुंबई से हुआ है, आरवीजी, आई वाज स्टेइंग देयर, केसी जैन से आर्टिकलशिप हुई है, एंड विष्णु जी अग्रवाल के अंडर में भी हुई थी आर्टिकलशिप. Then I shifted back to Surat in 2006. और तब से सर मुंबई, और इट इज सूरत इज आल्सो नोन एज ए मिनी मुंबई. सूरत मुंबई का तो हमारा असर रहता ही है, अभी मंथली 2-3 टाइम्स वी विजिट मुंबई. एंड रिगार्डिंग सर इंसॉल्वेंसी पे चालू करने से पहले, सूरत में मुंबई में अभी कोविड के केसेस भी काफी आ रहे हैं, ऐसा न्यूज में डेली हाइलाइट्स आ रहे हैं. मुर्तजा सर, yes, COVID थोड़ा वापस मुंबई में it's increased a bit. राइट, बिकॉज बीएमसी भी काफी शायद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वगैरह वापस इंप्लीमेंट कर रही है धीरे धीरे. Yeah. In 1 or 2 district, I think there is a declared lockdown also. It's a weekend, what a weekend and night curfew. It's not a full lockdown as it was in earlier June. No. Okay. But they have threatened to do it, increase it if it doesn't get into come into control. बराबर. So I pray कि आप सब लोग स्वस्थ रहें. नॉर्मली व्हाट हैपन, जो विंटर या समर भी कुछ आता है तो आती हुई या जाती हुई सर्दी लगती है हमें नॉर्मली. तो ये कोरोना भी ऐसा ही, आते हुए जाते हुए हम थोड़े से ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर भी है. बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक मोर प्रिकॉशंस इन दिस डेज, ताकि इसको आराम से हम कोरोना से बचा जा सके और नॉर्मल लाइफ वापस अपनी रूटीन में चालू हो सके. So coming to the topic regarding the insolvency and opportunities. So I think most of the chartered accountants nowadays, even not only younger, एक टाइम था जबकि एक सीए बनने के बाद एक चार्टेड अकाउंटेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता था. बट मैंने देखा, क्योंकि मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोलता हूँ चार्टेड अकाउंटेंट्स की, मैंने देखा आज की तारीख में आप 45, 55, 60 ईयर्स का सीए भी है तो वो भी ये कहता है कि क्या नया, क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज you know, the word is we are facing disruptions everywhere, either by way of technological or by implementation of new laws by the government of India or IFRS or Indias. मतलब जो अभी पहले एक कंट्री लेवल पे पूरा थॉट प्रोसेस चलता था, पूरा गाइडलाइंस, पूरा जो लो है, दैट गवर्निंग फैक्टर होता था एक कंट्री. बट नाउअडेज द गवर्निंग फैक्टर जो हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड जो कंपेबिलिटीज पे डिस्कशंस हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाई एवरीथिंग जो नॉलेज है हमारा ऑब्सोल्यूट हो रहा है. अभी मैं मेरे ब्रदर से बात कर रहा था कुछ ही दिन पहले, हमने ऑफिस नया ऑफिस प्रीमाइसेस में शिफ्ट हो रहे थे, तो हम लोग ने आर्किटेक्ट वगैरह रखा. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर आज दिन तक जो आपका नॉलेज है उसको आप जीरो मान के then you discuss with your computer agency, you discuss with the fire safety equipment agency, because everything gone change in everywhere. मतलब जब फर्नीचर लाइन में, इंटीरियर लाइन में भी इतना सब कुछ चेंज हो चुका है, और वो कह रहा है सर अभी तक हम उससे डिस्कस कर रहे थे कि अभी एग्जिस्टिंग ऑफिस में ये है, ये है, ये. बोले सर उसको आप अभी जीरो मानिए आपके नॉलेज को, एंड यू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद वेरियस एजेंसीज रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ऑफिस. तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आप 20 साल पुराना ऑफिस जाके बना दोगे वापस. तो द सेम थिंग अप्लाई इन आवर प्रोफेशन आल्सो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी वेरी गुड एग्जांपल, जहाँ पे कि एक नया चार्टेड अकाउंटेंट है या एक 60 इयर्स का चार्टेड अकाउंटेंट है. जीएसटी सेम वे, एक नया चार्टेड अकाउंटेंट है या एक जो एग्जिस्टिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, जैसे जीएसटी आया सबका नॉलेज सेम हो गया. बिकॉज जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, हमको एक ये बेनिफिट भी है कि सबका नॉलेज सेम हो जाता है. देयर इज नो कंपटीशन दैट वे, सीनियरिटी के हिसाब से. तो रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज सर, द बिजनेस प्रोसेसेस और professionals we have impacted in significantly we have impacted. But what is the good part of this disruptions? The good part is that every disruptions come with some hidden opportunities. कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी वो लेके आता है. सो अगर हम उसका पॉजिटिव पार्ट देखें तो जैसे कि
कई लोगों ने अपना जीएसटी में बहुत अच्छा कमांड बनाया, बहुत अच्छे ऑफिस सेटअप किए, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, जो केवल जीएसटी स्पेशलाइजेशन, लिटिगेशन, कंप्लायंस, रिफंड वगैरह में स्पेशलाइजेशन है, और वो आज बहुत एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। और आईबीसी इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। तो अपॉर्चुनिटीज को हमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए। हमारा नॉलेज जो है, हमें उसकी डेफिनेटली वी हैव टू वर्क हार्ड, और हमें हमारे को एक लर्निंग एटीट्यूड रखना रहेगा, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और किसी ने सही कहा है, यहाँ पे मैं एक quote बोलना चाहूंगा, किसी ने सही कहा है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम। बिकॉज जो जीएसटी आया उसी समय जो आदमी उसमें इन्वॉल्व हुआ, जो आदमी तैयार था कि मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को तैयारी करनी है, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया। बट कई लोग का नेचर ऐसा होता है, यार देखेंगे, अभी तो चेंज हो रहा है, अभी तो हड़ताल चल रही है, गवर्नमेंट स्टे लगा देगी, देखेंगे बाद में। तो इट इज लाइक ए सनराइजेस, इफ यू विल वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप हमेशा अपने नॉलेज में इन्वेस्ट इन नॉलेज, इन्वेस्ट इन बुक्स ऑलवेज। और हमारा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो एसएटी नॉलेज है सर, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज की, जो हमारे को ब्रांच कन्वीनर ने बोला था कि अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना है। सो जैसे जीएसटी मैंने एक बताया अपॉर्चुनिटी, एक सीए एज ए एंटरप्रेन्योर, इट इज आल्सो ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, जो कि हम लोगों का नॉर्मली उस पर ध्यान नहीं जाता है। जब भी मैं, जहाँ भी मेरा लेक्चर होता है, अभी मेरा कुछ दिन पहले ऑल इंडिया वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन में मेरा लेक्चर था, उसमें भी मैं यही बोल रहा था। और अभी मैंने रिसेंटली 4 दिन पहले जो सीएमए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो क्लियर हुए हैं, 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको मैंने अपॉर्चुनिटीज पे एक लेक्चर दिया, तो उनको भी हमने यही बोला कि व्हाई नॉट वी सीए, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेट ए गोल कि हम उस, जैसे मैंने उनको बताया कि सूरत में टॉप 10 में क्यों नहीं एक सीए का नाम आता है, टॉप 10 बिजनेसमैन या टॉप 10 नेटवर्थ वाले लोगों में क्यों नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मुंबई में क्यों नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए टॉप 10 में। ये कभी हम सोचते नहीं है। तो इसके लिए हमें सोचना जरूरी है, बिकॉज वी वी कंसल्ट टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स, वी नो द बिजनेस प्रोसेसेस, वी नो द what how business runs। नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए सीएफओ, सीईओ, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं एक टॉप लेवल पे, जो कि उस बिजनेस को रन करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम एज ए एंटरप्रेन्योर को एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें। इसके लिए एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप का यहाँ देना चाहूंगा, जिस जो पूरे वर्ल्ड फेमस है। When he joined the Birla Group, then the net worth of the Birla Group was at 5,000 Kumar Mangalam Birla. Net worth of Birla Group was below 5,000 CR, and now it is more than 1 lakh CR. और उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला, इट्स ऑल बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में आई हैव डन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ माय फैमिली। उनकी इच्छा नहीं थी, बट फैमिली के प्रेशर से किया। देन उस चीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर मैं सीए नहीं होता तो शायद मैं बिजनेस को इस बुलंदियों पे शायद ही ले जा पाता। Then the second, very recent, the first generation entrepreneur, AU Small Finance Bank, Mr. Agarwal, संजय जी अग्रवाल, I know him very well। वो एक स्कूटर पे घुमा करते थे। he from a very middle class family। स्कूटर पे घुमा करते थे। He started his career with DSA, हाउसिंग लोन, डीएसए एजेंसी लेके वो हाउसिंग लोन किया करते थे, जिसमें बैंक उनको 0.25 to 1% कमीशन दिया करता था। Then he incorporated one company with a capital of 1 lakh rupees only। स्कूटर पे घूमता था बंदा, लेकिन उसका विजन था कि यार कुछ करना है, मेरे को इसमें बड़ा करना है। 1 लाख रुपीज से उन्होंने कैपिटल से कंपनी खोली, धीरे धीरे उसमें कैपिटल इन्फ्यूज करी, एंड उन्होंने लाइसेंस लिया। देन ही वाज एबल टू सिक्योर सम प्राइवेट इक्विटी, और आज इस ग्रुप का वैल्यूएशन मोर देन 30,000 करोड़ रुपीस है, एंड ही इज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो सी एज एंटरप्रेन्योर देयर इज आल्सो वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि इस जो ये ग्रे एरिया है, नॉर्मली हम लोग इसमें नहीं जाते हैं, इस तरफ भी हमें एक बार देखना चाहिए। Then the other emerging areas are ADR, arbitration, mediation, then anti-money laundering laws, forensic accounting and fraud detection, forex and treasury management, independent directors,
valuation for security and financial assets, and last but not the least, insolvency and bankruptcy, of course. Because see, various platforms पे काफी हमारे जो senior chartered accountants है, they say always कि don't depend on the audits, because जो attestation function है, there is a very good technology coming that is called blockchain technology. So पूरा concept ही change हो जाने वाला है. Now we are पहले single entry accounting system हुआ करता था, अभी now we are following double entry accounting system, but with the implementation of the blockchain technology, they are coming with the try 3 times that accounting concept, 3 entry accounting concept like that. So, but that will done automatically. The system will do by automation. Everything will be happen. So उस केस में अपना जो attestation function है, केवल audit report sign करी और हमारा काम हो गया without any value addition. I'm not saying that कि हम value addition नहीं करते हैं. I'm not against that. But see, the technology को कोई रोक नहीं पाएगा. Technology आएगी और आएगी. इसके समय पे आएगी, और जब ये आएगी suddenly, तब शायद हम लोगों को टाइम भी ना मिले कि कब आ गई, कब हमारा बिजनेस खा गई. बिकॉज जैसे आप अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स देख रहे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट और अदर कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने इंडिया में भी काफी कुछ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करी, कुछ स्ट्राइक्स भी हुई, इसको वापस लीजिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाइए. बट सी, टेक्नोलॉजी को नोबडी कैन स्टॉप. वो आएगी, और हमेशा जो जीवन स्तर जो बढ़ाती है ऑलवेज टेक्नोलॉजी कस्टमर्स का, तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. इसी तरह द सेम वे हमारे प्रोफेशन के साथ भी होने वाला है. जैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, एट दैट टाइम मैं एक रिफंड का, मेरा एक बहुत अच्छा काम हुआ करता था, टीडीएस रिफंड का. और उस समय में उसमें अप टू 10% फीस हम लोग चार्ज करते थे, और काफी सारे मेरे हिसाब से मेरे प्रोफेशनल कलीग्स उसमें काम करते होंगे. रिफंड लेके आते थे, किसी का 10 लाख का 1 लाख रुपए की हम लोग फीस चार्ज कर लेते थे. और आज के टाइम में रिफंड का हमारे पोर्टफोलियो में 0%, नॉट मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे लगता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोर्टफोलियो में टीडीएस रिफंड का कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा प्रोफेशनल रिसिप्ट्स में, तो जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ करता था वो 0 हो गया. और उसमें तो ऐसा होता था कि इमीडिएट फीस आती थी, आप चेक लेके आओ और तुरंत आपको पैसा मिल जाता था. तो वो इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ. देन आईटीआर, अभी जो रिसेंटली फेसलेस असेसमेंट, आईटीएटी फेसलेस, ये सारी चीजें हम लोग जो फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वी नीड टू बिलीव मी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज कर रही है बिजनेसेस को. मेरे एक सिंपल एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा. One of my client has purchased a printing machine of ₹4 crore. I am talking about 5 years back story. Then वो जैसे ही वो मशीन खरीदी, he has implemented, उसने बहुत बड़ा इनोग्रेशन किया, बैंक लोन लिया, everything he did. Then he started his factory, because import किया तो उसमें करीब 6-8 महीना लग गया उसको ऑपरेशन में आने में. उसका स्टार्ट हुआ फैक्ट्री, और within 3 months after his inauguration, the new technology came in that printing मशीनरी सिनारियो. और वो बोलता है कि नई मशीन मेरे से सस्ती है, एफिशिएंसी ज्यादा है, कॉस्टिंग कम है, क्वालिटी अच्छी है. तो उसका वो प्रोजेक्ट ही ऑब्सोल्यूट हो गया विद इन 3 months. सो यही ड्यू टू दिस इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन गोइंग ऑन. सो हमारे जो प्रोफेशन में है, अगर हम वी रिलेट दैट स्टोरी विद आवर प्रोफेशन, तो अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, आने वाला टाइम भी. सो अभी टेक्नोलॉजी वो टाइम नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि यार अभी हमारे टाइम पे नहीं था, हमें नहीं आता है. हमें वो, बिकॉज समय की मांग है, एंड वी नीड टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल दिस थिंग्स. So let us discuss about the insolvency, because this insolvency is again a very big opportunity for the chartered accountants. So let us understand the core concept of insolvency, because पूरा इंसॉल्वेंसी जो लॉ है, इसके स्लाइड्स के इर्द गिर्द घूमता है. बिकॉज इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस, सो द बेसिक कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, एटलीस्ट 20-30% आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. सो व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी इज ए स्टेट where liability of a person, entity or whatever exceed its asset, and if it is treated, then it is called resolution.
And for corporates, it is called corporate insolvency resolution process. For individual, it is called individual resolution process. कितने लोग IPs हैं? कितने, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें how many are IPs? You can write down in your chat box. Chat box is there. Chat box में आप IP लिख सकते हैं. I will understand कि भी इतने लोग IP हैं. राइट, जैसे मैं IP हूं, मैं लिख रहा हूं चैट बॉक्स में IP. इसी तरह आप टाइप करके भेज सकते हैं. सो आई विल एबल टू ओके. सो ओके, सो कोई भी IP नहीं है तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे इसको आपको IBC लो. आज वी विल गो विद वेरी बेसिक लेवल. सो सी, व्हेन दिस वेयर liability exceed assets and if it is not treated, then resolution fails or resolution fails. Resolution करना चाहा but it is failed. Then for corporate it is called liquidation. For individual it is called bankruptcy. The wording का जो change है, ये wording बहुत important है. For corporate it is called liquidation. For individual it is called bankruptcy. So ये पूरा इसका fundamental है IBC का. Okay. And there are some myths regarding the IBC. बहुत सारे myths हैं businessmen और businessmen और professions में कि IBC is meant for the recovery. Bankers normally जब आप IP appoint होते हैं, so many bankers says, जैसे IP जाता है वो बोलता है मेरा कितना पैसा आप रिकवर करके दे रहे हो, कितना पैसा रिकवर करके दे रहे हो, कितना रिकवर कर, हमेशा उनकी जबान पे एक ही बात रहती है, रिकवरी, नथिंग एल्स. He don't want to listen us. लिटिगेशन क्या है, ऑपरेशन करना है सर, ये इसमें सिक्योरिटी रखनी है, इसमें मैनेजमेंट का ये रखना है, माल बेचना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, आप कुछ भी बात करेंगे वो नहीं सुनेगा. ये कॉल यही कहेगा मेरी रिकवरी कितनी आ रही है बताओ. सो हम उनको समझाते हैं कि दिस IBC is made for recovery or for what. So this is my question to all of you. You can write down in the chat box what you think. This is for recovery or for what. So if you say yes, it is for recovery, then please write down yes. And if any other thing, then you can write down in the chat box that for what IBC meant for. No, yeah, very right. It is not for recovery. It is not a recovery tool. But for what purpose IBC introduced? What was the basic idea of Government of India? For a business continuation. Yeah, you are very near to the answer. So the IBC is meant for resolution. It is not for recovery. If you will refer the BLRC report that was prepared by the banking law reform committee that was headed by T.K. Viswanathan ji, and that report was presented to the Government of India. And according to that report, the overall idea of the IBC for the resolution of the businesses at the micro level, it may impact some businesses, some businessmen, some management, directors, shareholders. But the overall idea of this IBC was not that. Overall idea is to protect the interest of country, to generate the employment. Okay, because what happened वो उसको हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. My next question to all of you is, the IBC is meant to kill the businesses or for what? My question to all of you is, IBC is meant to kill businesses? Make it survive. Yeah, it is not meant for kill businesses. The IBC is to promote entrepreneurship. The basic two governing principle was there in the BLRC report. That was it is meant for the resolution and it is to promote entrepreneurship. Why it is? Let me explain you that for that you have to go before IBC scenario. Before 2016, what was happened? कि जब NPAs होते थे तो what was happening कि एक बिजनेसमैन बिजनेस चालू करता है और अगर NPA होता है
तो उस बिजनेसमैन को एक चोर की दृष्टि से इंडिया में देखा जाता था। तो उसमें क्या होता था कि 10-10 साल 15-15 साल तक वो एक एग्जिट नहीं कर पाता था। अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसके केसेस इतने, लिटिगेशंस इतने, वेरियस कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन, डीआरटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट और वेरियस, तो उसमें लिटिगेशंस में वो चला जाता था। तब तक होता क्या था, उसकी जो एसेट्स है वो डिटोरिएट हो जाती थी, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ऑब्सोल्यूट हो जाती थी या उसमें कोरो जंग लग जाती। देन उसके बाद क्या होता था, जो उसका प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट होता, उससे गवर्नमेंट को लॉस, रेवेन्यू लॉसेस, टैक्सेस के, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होने से जीडीपी को जो लॉस है वो हो रहा है। सो आईबीसी आया कि अगर there are some inefficient management are there, they are not able to run the businesses, so why not we should shift the management in the hands of efficient management. So the idea was discussed and it was implemented finally. So ये काफी पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इससे बिजनेसमैन का भी थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। जैसे कि पहले बिजनेसमैन, मेनी ऑफ बिजनेसमैन वर ऑफ ओपिनियन दैट डेट जो है, लोन डेट आर नॉट नॉट मेंट टू रीपे। जो गवर्नमेंट या नेशनलाइज बैंक से वो डेट लेते थे, कई लोगों का ऐसा थिंकिंग हो गया था कि क्या कर लेगा बैंक। एक दो केसेस भी हुए जो मेरे ध्यान में है और वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। उसके प्रमोटर्स बोलते थे कि आपको अगर यूनिट चलानी है तो 5,000 करोड़ रुपया हमें दीजिए, नहीं तो ये यूनिट की चाबी ले लीजिए। बैंकों के पास जाके यहाँ तक थ्रेटनिंग देते थे, बिकॉज बैंकों ने उनको 30-40,000 करोड़ एक्सपोजर दे रखा था। सो ये सारा चालू हो गया, ब्लैकमेलिंग वगैरह ये सारी चीजें, और प्रमोटर्स इंडिया के जो लॉज हैं उनको प्ले करने लगे और बैंक्स उसमें ट्रैप हो गए। तो आईबीसी आने के बाद आपको एक एग्जांपल और एसआर का है, आप एसआर देख लीजिए। रिसेंटली प्रमोटर्स कुछ भी नहीं कर पाए और जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है उनके हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया और रिकवरी हो गई और आज यूनिट बहुत अच्छी चल रही है। और यू कांट बिलीव फ्रेंड्स कि एसआर इज कमिंग अप विद 200% कैपेसिटी एक्सपांशन और अभी वो प्रॉफिट में है। जब आरपी उसको रन कर रहा था तब भी ईबीटा पॉजिटिव आ गया और अभी तो उसका फाइनल पॉजिटिव नेट प्रॉफिट में है कंपनी, और दे आर कमिंग अप विद ह्यूज एक्सपांशन। तो व्हाट वाज हैपन कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था, उनका जो नजरिया था, उनकी सोच थी, पता नहीं उनको क्या हुआ कि दे वर नॉट एबल टू रन द यूनिट profitably, and they were not taking care of all stakeholders, even employees वगैरह का, bankers का, गवर्नमेंट का ड्यूज वगैरह सब पेंडिंग ही चल रहा था। तो आईबीसी आने के बाद ये इम्पेक्ट हुआ है। सो एक पैराडाइम शिफ्ट भी हुआ है सारे बिजनेसमैन का। अभी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी लोन लेता है, डिमांड जो लोन की कम हुई है, अभी बैंकर्स कहते हैं यार डिमांड नहीं है हमारे मार्केट में। उसका एक रीजन ये भी है कि अभी जेन्युइन जो बिजनेसमैन हैं, जो इसको इंडस्ट्री लगानी है, वही आएगा। जिसको ऊपर नीचे करना है अभी वो देखेगा कि यार मेरा पैसा वो भी आईबीसी लेके चला जाएगा, गवर्नमेंट सडनली विल चेंज द मैनेजमेंट। सो बहुत अभी एक यूनिट लगाने से पहले, लोन लेने से पहले आदमी 10 बार सोचता है, उसके बाद वो लोन लेता है अभी। Yes. So let us understand a journey of endless hope, IBC. If you will refer the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum, that report says that report particularly identify three major drivers which contribute in the growth of a country's economy. GDP को जो directly contribution है. According to that report, a country need these factors. One is basic requirements such as institutions and resources, then competition, and the third one is innovation. So there are three factors. अभी slide में शायद I think settings में कुछ problem है. But basic requirements such as institutions and resources, second is competition, and third one is innovation. और further this report identifies कि जहाँ भी जिस country ने reliance on competition and innovation less than 40% रखा है, that is stage of development of that country's economy is first stage, जो विकासशील देश जो हम बोलते हैं, and the per capita in GNP is less than $2,000, and where the reliance on the competition and innovation is more than 80%, then that is fifth stage of
development for the country's economy. And वहाँ पे per capita income GNP that is more than $17,000. तो इतना फर्क है इसमें. Then economic freedom and economic performance have very high positive correlations. A firm needs economic freedom broadly at the 3 stages of a business. ये बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करने के लिए. One is free entry. कब आएगा ज्यादा बिजनेसेस डेवलपमेंट सब कुछ कब होगा? जब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रीडम दी जाए. कि नहीं तो क्या होता है इंडिया में तो 36 एक बिजनेसमैन बोलते हैं कि यहाँ पे 36 डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं आपको एक बिजनेस चालू करना है. तो यहाँ पे फ्री एंट्री होना चाहिए, जो कि अभी गवर्नमेंट ने काफी उसको फ्री एंट्री टाइप किया है, जिसके कारण अपना जो इंडेक्स है उसमें भी अच्छी जंप मिला है. Then free competition to continue the business and free exit to discontinue the business, because business चालू करना कोई गुनाह नहीं है. आपने business चालू किया है, अगर if it fails, you fails. हर आदमी प्रॉफिट के लिए करना चाहता है, बट कई बार फेल हो जाता है. If it is a genuine failure, then there should be some easy exit option. So for अपना जो free entry था वो पहले आ चुका था. कंपटीशन 92 में आ चुका था. 92 में जब मनमोहन सिंह ग्लोबलाइजेशन लेवलाइजेशन लेके आए, then the free competition that time it was introduced. और कंपटीशन एक्ट भी आ गया था 2002 में. देन लेकिन फ्री एग्जिट ऑप्शन नहीं था इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास. अगर जेन्युइनली कोई बिजनेस फेल हो रहा है तो उसके पास एग्जिट ऑप्शन नहीं था. उसकी पीढ़ियां निकल जाती थी, 1-2 पीढ़ियां, और उस केस को सोल्व करने के लिए. सो आईबीसी आया फ्री एग्जिट प्रमोट करने के लिए, फ्री एग्जिट देने के लिए बिजनेसेस को. आईबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड. अभी हम इसको और आगे समझते हैं आईबीसी को. सो जहां पे भी हायर कंपटीशन और इनोवेशन होगा, जिस भी कंट्री की जीडीपी में, इकोनॉमी में, वहां पे हायर रेट ऑफ बिजनेस फेलियर्स होती है. लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ यूएसए. अगर आप उसकी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो जो भी स्टार्टअप्स यूएसए के स्टार्टअप्स की फेलियर रेशियो मोर देन 97% है. 97% बिजनेसेस फेल्स विद इन 5 years ऑफ देयर स्टार्ट. 5 साल में ही विद इन 5 years फेल हो जाते हैं. ये यूएसए के स्टार्टअप्स की फेलियर की रेट. लेकिन जो बचे हुए 3% है वो पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं, जिसमें अमेजोन और ये सब आ गया. हमें क्योंकि अमेजोन और ये पता इसलिए है कि ये सक्सेस है, हमें फेलियर्स का पता नहीं है. बट यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ए वेरी गुड एग्जिट ऑप्शन टू देयर बिजनेसमैन. इसीलिए वहां पे बिजनेसमैन रिस्क लेने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं कि यार चलो फेल भी हो गया तो गवर्नमेंट इज देयर, वी कैन चूज an easy exit option, or we can start some new thing. So high rate of business failure, that report defines that because of 2 reasons. One is exogenous and one is endogenous, means external factors or internal factors. उसके कारण होते हैं. What are the internal or what are the external factors जिसके कारण business fail हो सकते हैं? Can anybody type in the chat box? What are the factors कि जिसके कारण बिजनेस फेल हो सकते हैं? Maybe external reasons or internal reasons. Internal and external. Yeah, very nice. Yes, अब्दुल हुसैन जी ने बताया कि ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज. वेरी नाइस. देन सलमान जी ने बताया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. वेरी ट्रू सर. देन भुजवाला जी ने बताया मिसमैनेजमेंट. यस, परफेक्टली. गवर्नमेंट पॉलिसीज. मोहम्मद जी ने बताया. देन निशा जी ने बताया एनपीए कैन बी ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस. यस. लेबर अनरेस्ट, पॉलिटिकल रीजंस. यस. सो वेरियस रीजंस आर देयर जिससे कि बिजनेसेस फेल होते हैं, इंक्लूडिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय सलमान जी. वेरी राइट सर. सो दिस आईबीसी बाइफरकेट बिजनेस फेलियर्स को ये 2 रूप में बाइफरकेट करता है. वन इज ए failing but viable firm, जो कि फेल हो रही है बट स्टिल वाइबिलिटी इज देयर. तो आईबीसी कहता है ऐसी फर्म्स का आप रिजोल्व करिए.
or you transfer the firms in the hand of efficient management from the inefficient one. Because आप ऐसी फर्मों को चलाइए, चाहे ठीक है जैसे कि कैंसर है, सी एनपीए इज ए कैंसर फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉर एनी इकोनॉमी. तो आईबीसी कह रहा है कि अगर कैंसर है उसका हाथ काटना है तो एक बार काट दो, लेकिन ताकि आदमी जीवित रहेगा, इंडस्ट्री जीवित रहेगी. द मेन प्रिंसिपल इज कि भी इंडस्ट्री को किल नहीं करना है. सो वेयर ए फर्म इज फेलिंग बट वाइबल, you under IBC we come a resolution professional is appointed, IP insolvency professional as a RP, and by the implementation of certain process, very well defined process under the IBC, he transfers that firm, that viable firm, from the inefficient management to the efficient one, right? So ताकि इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट चले, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती रहे, राइट? और अगेन आईबीसी आइडेंटिफाई those firms which are failing and unviable, जहां पे वाइबिलिटी खत्म हो चुकी है. हो सकता है कि लिटिगेशन चल रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं, आईबीसी आने से पहले के हैं, और मशीनें सब चोरी हो चुकी है, आधी चोरी हो जाती है, पैनल्स चले जाते हैं, वायरिंग चली जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ऑब्सोल्यूट हो गई. तो उस केस में क्या करने का? उस केस में आईबीसी बोलता है यू रीडिप्लॉय द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड रिलीज द मैनेजमेंट सो दैट दैट मैनेजमेंट कैन डू सम अदर बिजनेसेस. आप उस मैनेजमेंट को लिटिगेशन में ही उसकी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं तो लास्ट तक उसको काफी सारी बीमारीज हो जाती है, मर जाता है, मतलब टेंशन में रहता है वो. सो आईबीसी सेज in that case you please release those management so that they are free to do some other businesses, and you redeploy those assets in some alternative uses so that they can contribute to the GDP of a country, right? So उसको हम लिक्विडेशन स्टेज बोलते हैं नॉर्मली. इस केस में लिक्विडेट करते हैं हम उस कंपनी को. लिक्विडेट करने के बाद लिक्विडेशन में हम जाते हैं, और लिक्विडेशन में ऑप्शन करके उसका आइदर हम, देयर आर वेरियस मेथड्स वेरी वेल डिफाइंड अंडर आईबीसी, कि लम सम सेल, स्लम सेल, पार्शियल सेल, कलेक्टिवली सेल, गोइंग कंसर्न सेल. तो जैसे एक लिक्विडेटर जो कि हम लोग रहते हैं आईपीज, वो लिक्विडेटर को जैसा ठीक लगे viability of the business, he will assess, and there are 7 type of sale methods very well defined under the IBC. और उसमें he will consult with the stakeholder consultation committee, and accordingly he will take the decisions and auction the assets and release the management, as well as redeploy the assets for some alternative uses. Okay, so what were the objective of the IBCs? आईबीसी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमने अभी अपने जो सेशन में है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी, बट फिर भी द आईबीसी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. इसके आने से पहले कम से कम 10 से 15 लॉ अलग अलग हुआ करते थे, और ये कोड उन सारे लॉज, ये आने से वो सारे लॉज कंसोलिडेट हो गए और आईबीसी एक सिंगल कोड के रूप में आया. Then it give a time bound resolution process. ऐसा नहीं कि आपका केस चल रहा है 15 साल, 20 साल, 25 साल तक चलता ही रहे. It give a 180 days timeline for the resolution, maximum 330 days. अगर आप नहीं कर पाए, you go into the liquidation, and in the liquidation also there is a 1 year timeline. एक साल के अंदर आपको liquidate करना है. और अगर आप डिले कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो there is a NCLT court where you have to file a interlocutory application. You have to give reason justifications. After proper hearing, they will give their decisions, right? Otherwise, हमारे अगर कोई हम लिंगर ऑन कोई अलग कारण से कर रहे हैं तो disciplinary actions provisions are there under the code. So the other objective is to maximization of the value of assets. Why? Because by giving a time bound resolution, we as a RP we are able to retain the value of asset. जैसा कि हमने बताया कि कई बार एसेट में जंग लग जाती है, टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो जाती है, पिलफ्रेज हो जाती है, मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी और समथिंग. तो IBC give a time bound resolution and it maximize the valuation of the asset. Then it also give a easy exit option and to promote entrepreneurship, जो कि हमने already we have discussed. Then alteration in the priority of payment of government dues. पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के इतने ड्यूज हो जाते थे एनपीए यूनिट में
कि बैंक को पता ही नहीं चलता था कि मेरा लोन ज्यादा है या गवर्नमेंट का ड्यूज ज्यादा है, बिकॉज मल्टीपल गवर्नमेंट की ड्यूज पेनल्टीज मल्टीपल होते होते इतने ड्यूज गवर्नमेंट के चार्जेस उसमें अटैच हो जाते थे। सो यहाँ पे आईबीसी आने के बाद गवर्नमेंट हैज आल्सो अल्टर्ड देयर प्रायोरिटी। पहले आईबीसी से पहले गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो फाइनेंशियल क्रेडिटर से भी कई बार पहले हो जाती थी, और या फिर एट पार विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर थी। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर को पहले सबसे पहले वेजेस को टाइम दिया गया है प्रायोरिटीज, देन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, देन एम्प्लॉयज को, और उसके बाद अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर और गवर्नमेंट्स वगैरह इनके साथ आती है। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। देन क्रेडिटर्स इन कंट्रोल। क्रेडिटर्स इन कंट्रोल मींस पहले बिफोर आईबीसी व्हाट वाज हैपन कि एक अकाउंट एनपीए होता था, उसके बाद रीआरटी में जाओ, एक्शन कोर्ट का डीएम नोटिस, डीएम परमिशन, वो सारी चीजें लेने के बाद आप यूनिट को कहीं पोजीशन ले पाते थे। बट हियर इन द आईबीसी यू a banker need not to wait till your account become NPA. From the date of any default, from the date of default, यहाँ एनपीए कंसेप्ट हट गया पूरा आईबीसी में। आपका एक इंस्टॉलमेंट का भी डिफॉल्ट कर दिया है, इट इज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी इज रनिंग, कंपनी में स्टॉक पड़ा है, सब कुछ चल रहा है, और आपका अगर एक इंस्टॉलमेंट उसने डिफॉल्ट किया और आपको लग रहा है कि ये मैनेजमेंट का इंटेंशनली इसने ऐसा किया है, मुझे चीट करने की इंटेंशन, बैड इंटेंशन से ये काम कर रहा है, तो बैंकर्स या क्रेडिटर्स इमीडिएटली दे कैन इनिशिएट सीआईआरपी प्रोसीडिंग, और उसके होने से वन आईपी as a RP, he will take the charge of that unit, and the management, the powers of the management will suspended and will be vested on that particular RP. He will run the unit under the guidance, under the consultation of that committee of creditor, और immediately उसका resolution आ सकता है। Because कई बार क्या होता है कि timely किसी चीज का हम solution नहीं लाते हैं, चाहे कोई बीमारी लग जाती है ना, तो बीमारी लगने से पहले उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर उस बीमारी को आप वेट करते रहेंगे तो वो उसका एक विकराल रूप ले लेगी, हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो दिस आईबीसी सेज कि जैसे बीमारी आप आइडेंटिफाई करते हो, जैसे डिफॉल्ट आइडेंटिफाई करते हो, and it gives power to the creditors and financial institution, even operational creditors also, to initiate CIRP proceedings. And inefficient to efficient one, the one more objective which we have already discussed, that inefficient management है, उसकी जगह efficient management आप लेके आ जाओ। वो मैनेजमेंट बोल सकता है कि यार आईबीसी आने से मेरे नुकसान हो गया, मेरी कंपनी हाथ से चली गई, ये हो गया, वो हो गया, बट ये माइक्रो लेवल पे दिस कैन बी हैपन, बट इफ यू विल सी द मैक्रो लेवल, एट द इकोनॉमिक लेवल, एट द और जीडीपी लेवल, तो इट इज वेरी नेसेसरी, आईबीसी इज वेरी नेसेसरी टू रन द बिजनेसेस। ये सारे एक्ट्स जो हमने डिस्कस किए, दीज ऑल एक्ट्स आर कंसोलिडेटेड नाउ। उससे पहले इतनी सारे एक्ट्स में जाना पड़ता था लोगों को एनपीए अकाउंट होने के बाद। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड? The structure, the code is divided in total 5 parts. Part 1 जो कि सब में होता है, title, definitions, etc. Part 2 deal with the CIRP, liquidation, fast track CIRP, voluntary winding up. ये normally जो companies है, corporates हैं, उनके लिए Part 2 applicable है. For Part 3 is applicable for the bankruptcy for individuals. ये अभी applicable नहीं हुआ, ये partly applicable है to the extent of the guarantor of corporate debtor. बाकी पर्सनल इंसॉल्वेंसी अभी तक इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। लेट मी टेल यू, अभी इवन आईबीसी जो एक्ट है उसकी इनिशिएशन सेक्शन 7, 8 एंड 10 वो वैसे भी सस्पेंडेड है टिल 31 मार्च बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अभी कोई भी नया डिफॉल्ट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड अगर कोई है तो उसके लिए बैंक इनिशिएट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है अभी। देन Part 4 is deal with the institutional framework, IPs, IPAs, IUs, code of conduct, etc. And of course, part 5 जो सारे acts में होता है, it deals with repeal, amendments, transitional provisions, etc. So the regulatory mechanism of the IBC code is as under. There is an Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Then IBBI is there, Insolvency and Bankruptcy Board of India, which govern the implementation of this code with the adjudicating authority. Adjudicating authority take the decisions, कोई भी litigations है, applications है, admission है. There is NCLT, National Company Law Tribunal. Then IBBI के अंडर में
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, देन वैल्यूएट्स है, वैल्यूअर आरबीओज है, दोज ऑल आर गवर्न्ड बाय द आईबीपीआई. Then purpose of the insolvency resolution process. What is the purpose? The purpose of insolvency resolution process is to make sure that the debtor is properly relieved from their debts and making sure that the creditor are repaid their debts in a fair and expedient manner. In a fair manner. The word used is the fair. It is not कि max उसको आप रिकवरी कितनी लाके दे रहे हो. जरूरी नहीं कि अभी मेरे एक अकाउंट में एक अकाउंट हमने रिजोल्व करके दिया, उसमें 100% हमने रिकवरी करके दी बैंक की, लेकिन दूसरे अकाउंट में 750 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो था और टोटल मेरा रेजोल्यूशन प्लान आया 27 सीआर का, बिकॉज उस पे एसेट ही नहीं थी. वो 15 साल से केसेस चल रहे थे, सारी एसेट्स जा चुकी थी, ऑब्सोल्यूट हो चुकी थी, कोई काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने 27 सीआर फेच किया. 27 किया, वो मैक्सिमम 1% ऑफ द टोटल डेट हुआ, बट हो गया, वो एसेट्स फ्री हुई, मैनेजमेंट फ्री हुआ. तो इट इज नॉट सेइंग कि आप रिकवरी मैक्सिमम करिए, इट सेज फेयर रिकवरी. जो 27 गया वो फेयर वैल्यू होना चाहिए, फेयर वैल्यू में हमने बेचा है उसको और रिकवरी करके बैंकर्स को फ्री किया है. Then intention of the code, the IBC 2016 is a single law to deal with the resolution and liquidation of the corporate, partnership, individual, etc. Insolvency moved from erosion of net worth to default. Independent person, insolvency professional to take over the management and operation of the borrower. ये सारा हमने कवर कर लिया है, but just I'm reading. Better information between creditor and debtor. In case of fraudulent diversion of the asset, ये important है. In case of fraudulent, see, the IBC provides easy exit option to those promoters जो कि genuine business के कारण, genuine business transactions के कारण उनको लॉस हुआ है, बट अगर वहां कहीं मेलाफाइड इंटेंशन है, फ्रॉडलेंट डाइवर्जन्स उन्होंने किए हैं, तो आईबीसी के पास इतने सारे हार्श प्रोविजंस हैं जहां पे कि उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन, पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर सकता है, चाहे वो मॉर्गेज है या नहीं है, और इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस भी है फ्रॉडस्टर्स के लिए आईबीसी. कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि हर लॉ में होते रहते हैं, आईबीसीज में भी हुए हैं. Has been amended various times law. So in Vinita ji, can you please come near the mic? Your voice is not audible. Yeah. Yes, sir. The Insolvency and Bankruptcy Code was amended first in 6th of June 2018. It's still not audible. Okay. Pradeep ji का बराबर आ रहा था. Yes, 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 sir. You are very loud and clear. Insolvency and Bankruptcy Code. Perfect. It was. मैं इसको बोला जैसे मेरे को आवाज लगाती है, डांटती वैसे बोल दो. Continue, Vinita. Thank you. So Insolvency and Bankruptcy Code, this was amended various times, and जो बहुत basic amendments which were need of the hour, I have listed them. So it was a section 12A that in case a company has been brought into insolvency resolution process, but after getting it admitted into this process, there is some settlement or something else that borrower is repaying everything, and we don't need 180 days process to be carried out. So in that case, section 12A was introduced for withdrawal of application. It mentions that with the permission of 90% of the financial creditors, an application can be withdrawn. Further, section 25A was amended to give the rights and duties of authorized representative, and this was the result of that home buyers case. Duty infrastructure. Because of the home buyers and there was no
Vinita ji, again there is some problem with the audio. Section 29A, it was introduced for giving the eligibility criteria for the resolution applicants. It was the result of a case of SA Steel के बाद में in June 2018, Section 29A was introduced to provide the eligibility criteria कि कौन नई company purchase कर सकते हैं, who can be the purchaser for the corporate debtor. Further, 32A, it was the result for prior offences like in Bhushan Steel. Section 234, Section 235A, जहाँ पे की specific penalty दी गई है, because अगर in case fraud has been incurred, so it provides the punishment for that. Section 238A, Limitation Act was made applicable to Insolvency and Bankruptcy Code. And due to this, various applications, they were like that they become time barred, because अगर आप 3 years का limitation period if you introduce from the date of default, तो 3 years में हो सकता है कई बार application financial creditor file करता है, कई बार नहीं करता है. तो section 238A gives a limitation period being applicable to applications to be filed under IBC. And 240A, it was introduced for MSME. MSMEs में ऐसा होता है सर कि जैसे सूरत is a city of MSMEs, जहाँ पे large corporates कम है और MSMEs ही हैं. तो वहाँ ऐसा होता है कि इन MSMEs people are not readily investing. मतलब वो कुछ ऐसा sector है कि जो run कर रहा था, that person has that capability and everything, that he may be having those experiences and eligibility to run the businesses. So in order to cater to the needs of micro, small and medium enterprises, this section was introduced that in MSME, section 229A, that is the ineligibility criteria for new buyers, will not be applicable for MSMEs. So these are some guideline provisions which have changed the way how IBC was moving in. Role and opportunities for chartered accountants under IBC regime. So let us discuss that what are the role of chartered accountants under this IBC regime. As a chartered accountant, हम इसमें क्या कर सकते हैं? What is our bread and butter? So the role of chartered accountant I have defined as IP as well as not as IP. अगर आप IP है तब तो आपके पास काफी रोल है जो आप यहाँ पे you can cater and you can earn a very good professional fees. But जो IPs नहीं है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, because जो IP नहीं है उनके लिए भी IBC में still there are a lot of opportunities for them also. So as a IP, he can be appointed as a IRP, that is interim resolution professional, जो कि NCLT में order आने के बाद 30 days तक अपनी this whole process. Yes. So IRP जो है वो 30 days तक normally ये process करता है. Then in the first COC meeting, committee of creditor meeting, either he is appointed as a RP or he is replaced by some another RP. Then the IP can be liquidator, he can be representative of class of creditor. Yeah, and not as IP, all chartered accountants can contribute. CA can appear before the NCLT. He can issue demand notice and he can reply also of those demand notices. He can give a support services to IP or IPE, that is. Vinita ji, we can't hear you. Whatever you're saying. Pradeep ji की आवाज आ रही है, but your voice is not coming. Maybe the position of the mic could be a different place. Yeah. For getting a resolution.
For getting a resolution now plan, okay, sir? Yes, now it's good. Yes, thank you. for getting a resolution plan, we need support services. Like अगर हम insolvency professional हैं, तो every insolvency professional will not be in a position to cater to all the support services which are needed in getting a company resolved. जैसे कि हम अभी, let me give you some example. We are also giving consultancy to our clients for preparation of resolution plan, and for that we are charging from 2 lakhs to 20 lakhs, depends upon the case. So that is also a very big chunk where उसमें कोई IP होना जरूरी नहीं है. So अगर आप बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं resolution plan by taking care of various laws or repayment conditions, क्या if you have a very good understanding of businesses, then आप ये consultancy शुरू कर सकते हैं, और इसकी काफी अच्छी डिमांड भी है मार्केट में. Then forensic and transaction audits you can perform, because हमारे हर एक केस में हम लोग forensic auditor अपॉइंट करते हैं. तो उस केस में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबके पास, हमारे पास, इवन हम भी कई बार जहाँ हमारा केस नहीं होता है हम लोग फोरेंसिक ऑडिट करते हैं उन केसेस में. देन वैल्यूएशन, डेफिनेटली वैल्यूएशन अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि चार्टेड अकाउंटेंट कैन बी वैल्यूअर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स के. तो हर एक केस में दो वैल्यूअर्स हमें अपॉइंट करने होते हैं हर क्लास ऑफ एसेट्स में. वन इज लैंड बिल्डिंग, अनदर वन इज प्लांट एंड मशीनरी, देन द थर्ड वन इज एसएफए. सो एसएफए में हम चार्टेड अकाउंटेंट्स अपॉइंट हो सकते हैं. उसके लिए इंस्टीट्यूट एक कोर्स भी करवाता है, आईबीबीआई वैल्यूएशन कोर्स का सर्टिफिकेशन. तो आप सर्टिफाइड वैल्यूअर हो जाते हैं, और उस वैल्यूएशन कोर्स से आप अभी कोई भी पहले जैसे शेयर इशू या इनकम टैक्स में कहीं भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लग जाता था एनी चार्टेड अकाउंटेंट का. बट नाउ कंपनीज एक्ट में भी अमेंड हो चुका है, सर्टिफाइड वैल्यूअर का ही सर्टिफिकेट लगेगा. Registered valuers under Registered Valuer Rules 2017 can do the valuation for any class of assets, whether it be a land and building, plant and machinery, or security financial assets. So chartered accountants can be valuers for security financial assets. And as we have already discussed, the preparation of resolution plan, the support services for insolvency resolution, it can also be provided by chartered accountants. Because chartered accountants has that business skill and that understanding of finance, that they can prepare a resolution plan, how the company will be run. जैसे हम एक project finance बनाते हैं, एक project report बनाते हैं, तो for every project report we have कि कैसे financials move करेंगे, what will be the projections, how the business will be run. So in that case, same here is applicable for preparation of resolution plans. A chartered accountant can be a better person to draft everything. Okay. So what is the eligibility for CA to become an insolvency professional? The CA having 10-year experience can take limited insolvency exam, and after clearing and after getting some practical training, that is 52 hours training, apply to IBBI for registration. A chartered accountant which is having more than 10-year experience. But जो 10 साल से कम experience है उनको भी यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, because CA having less than 10-year experience can take GIP, that is Graduate Insolvency Program, run by IICA, Indian Institute of Corporate Affairs, and after completion apply to IBBI for registration. And what this program is, the eligibility of this program, a qualification is required, chartered accountant, experience, no experience is required, age limit is there, that 28 years age honi chahiye jab registration kar rahe hain tab. And the total fees of that program is including hostel fees and everything is around 12.25 lakhs. It is a residential program of 2 years. 30 का बैच ही होता है ऑल इंडिया में, एक ही बैच अभी चालू होता है, वन बैच फॉर 30 स्टूडेंट्स. तो कोई अगर जिसको अपना करियर चालू करना है, एवरी ईयर एक बैच चालू करती है इंस्टीट्यूट, और किसी को अपना करियर अगर इसी में लीगल में या इंसॉल्वेंसी में, इफ एनीबॉडी वांट टू मेक हिज करियर इन दिस फील्ड, देन बिलीव मी दिस इज अ वेरी गुड कोर्स, और इसको हमको परस्यू करना चाहिए. Role as IRP, जैसा कि we have already discussed that in case you are an insolvency professional, you can be an interim resolution professional.
Interim resolution professional or resolution professional has a somewhat difference only. Interim resolution professional is a person who acts as an RP, as an IP for a corporate debtor for 30 years, 30 days. तो जो starting के 30 days है, that will be catered to by IRP. और IRP का major जो part होता है, वो ये होता है कि he is required to constitute a committee of creditors. Committee of creditors क्या होता है? जो हमारे financial creditors हैं, corporate debtor की जो, अगर हम basics में जाएं, section 7, section 9 और section 10 में application can be filed. In case of filing of application, it can be by operational creditor, it can be by financial creditor, it can be by jointly by financial 2-3 financial creditors, or it can be by corporate debtor itself. मतलब मैं खुद भी एक corporate debtor company खुद भी जा सकती है कि we need to move on into insolvency. Someone is saying that can IRP and RP be the same person? Yes, both can be same person. In case IRP is ratified and reappointed as RP by committee of creditors. So, जो first role जो IRP को करना होता है after appointment, NCLT is a adjudicating authority, जो हमें एक order देती है that CIRP has commenced for this corporate debtor. जैसे ही CIRP begins, IRP is required to issue public notice for CIRP. मतलब कि न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा. It should be one in regional language newspaper and one in English newspaper. As well as in case a corporate debtor is having any website, it should be displayed there. Also, it needs to be uploaded at IBBI website. IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India. So उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी एक फॉर्म ए है which is required to be uploaded for giving public notice of CIRP. जैसे ही पब्लिक नोटिस आपने दिया, बिकॉज इसको आपको 3 days में ही देना होता है, 3 days of receipt of order, आप ये करेंगे, उसके बाद you will take control of the management, because now IRP जो कि insolvency professional है, he is the sole person who is going to take care of any activity, whether it is a going concern, whether or not it is a going concern, whether it is a defunct company. In that case also, he is required to take custody of the assets, control of the management, anything which is pending. कभी होता है ना कि एक कंपनी के अंदर वो पिछले कुछ years से debtors receivable are standing. So in case debtors receivable standing है, तो उसका management भी is also to be taken over by IRP. All the assets, all the liabilities will be the responsibility for IRP. Then he will collate the claims. जो हम ये public announcement देंगे, it will give a 14 days criteria to every creditor of the corporate debtor कि आप 14 days में आइए अपना claim लेके. That will be verified and collated by resolution professional or interim resolution professional. Interim resolution professional जैसे ही 14 days over होते हैं, he will verify the claims, कौन financial creditors हैं, कौन operational creditors हैं, और other class of assets जैसे कि employees हैं और government dues हैं, unsecured financial creditors हैं. So he will collate all the claims and divide them into parts. Which category of creditors have been, what all are the categories of creditors for this corporate debtor. After identifying the category of creditors, this IRP within 21 days of commencement, he will constitute a committee of creditors. In case किसी भी corporate debtor में we have financial creditors, so committee of creditors will be constituted with all the financial creditors, whether secured or unsecured. Everyone will have the voting right. और अगर कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जहाँ financial creditors है ही नहीं, only operational creditors हैं, कुछ supply के regarding supply of goods था, supply of services था. So in that case, that committee of creditors will be constituted by operational creditors. And after constitution of committee of creditors,
first committee of creditors meeting will be conducted within 30 days of commencement of CIRP. And जब ये committee first meeting of committee of creditors is organized, after that जो IRP का tenure है, it comes to an end. At the time of first this meeting, these committee of creditors will be required to either reappoint this person as RP or replace this person as with new person who will now act as RP. As I have already discussed a few timelines that within 3 days we are required to give a public notice. Then there is 14 days timeline for submission of claims. एक submission of claims के अंदर after amendment of as per regulation 12 part 2 of CIRP regulations, it can be submitted up to 90 days of commencement of CIRP. For the verification, I have already stated that within 7 days, that is within 21 days of commencement of CIRP, verification is required to be conducted, and then constitution of committee of creditors will be done and report will be given to Honorable Adjudicating Authority or NCLT for that area. And first meeting of committee of creditors will be conducted within 7 days of that report. And we need to give a 5 days notice for conducting committee of creditors meeting. And at the time of first meeting of committee of creditors, this resolution will be passed to appoint RP or to replace with new person who will act as RP. Or RP or IRP, IRP was interim resolution professional and RP will be resolution professional. So role of resolution professional will be the same कि पहले जो हमने control and custody of assets, तो अगर IRP and RP can be same person, so he already has the control and custody of the assets. Also he will write to corporate debtor क्योंकि suspended management जो है अब, he will be required to cooperate with this person. He will be required to share all the information available. Last 8 years के क्या records हैं, last कौन से litigations which are running, what all are the documents which are available with him, what all are the requirements like employees हैं, going concern है तो क्या processes चल रहे हैं, what all operations are being carried out, कौन carry out कर रहा है, list of all details of the employees, labor. These all records will be shared by suspended management to the resolution professional. After appointment as RP within 7 days, RP is required to appoint registered valuers. जैसे कि हमने अभी concept discuss किया था. For each class of asset, we require to appoint 2 registered valuers. For 3 classes of assets are there: land and building, plant and machinery, and securities and financial assets. So we are required to appoint registered valuers. Further, RP is required to prepare information memorandum. Information memorandum क्या होता है? Within 54 days of commencement of this resolution process, information memorandum is required. Information memorandum I will discuss in detail in next slides. But just to brief out here, section 36 provides a list of information which is to be included in this document. ये बहुत ही basic and required document है in order to carry out this resolution process. इसमें it details with जो भी assets and liabilities हैं for corporate debtor, all assets and liabilities, all the balance sheets for last 2 years, available balance sheets, plus details of all the litigations in case corporate guarantees have been given with by this debtor. मतलब हो सकता है कि कहीं पे related parties को
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी है on behalf of some other company, those all are required to be disclosed here. Also, any guarantees which are being given on behalf of this corporate debtor. Corporate debtor मतलब जो company resolution process में है, तो उसके behalf पे कोई corporate guarantees वगैरह दी हुई है, कोई litigations running है, at present कौन workman है, किसका claim आया है, all those details are provided in this document. This is a very basic document to carry out the whole resolution process, because बाद में जो resolution plan आएगा, that will also depend on this document. Further, RP is required to invite resolution plan. It is a basic and very detailed procedure there. Also, जैसा कि Pradeep sir has already discussed regarding forensic audit, transaction audit. So, in case last 2 years में there are some any cases which give an idea to resolution professional that there has occurred any preferential treatment to some people or some undervalued transactions has been carried out की जहाँ पर for carrying out a process you required to pay a 2 rupee amount, but it was carried out at 1 rupee amount. मतलब कि जहाँ पे कंपनी को लॉस किया गया due to fraudulent intention of key managerial personnel or any director or any officer in charge. So in order to avoid, okay, I will handle this question. Difference between forensic audit and transaction audit. Forensic audit, sir, is a broader term. Forensic audit में हम सब कुछ carry out करते हैं कि उस कंपनी के transactions गलत चल रहे थे, कोई person गलत था, या for a I would say a whole detailed analysis of all the operations which were carried out there. And transaction audit is a term. Transaction audit में IBC has defined 4 types of transactions: preferential transaction, undervalued transaction, fraudulent transaction with a fraudulent intent, or extortionate transaction. So in case a audit is allotted to a chartered accountant firm to carry out a transaction audit, so under these 4, yes, you are right. The forensic audit is macro and transaction audit is micro, because transaction audit covers only these 4 types of transactions. And but for forensic audit, we carry out process for all the operations and all the type of transactions, operations, debtors galat the kya, मतलब it is a broader term. Further, RP has a role of maintaining updated list. जैसा कि I have already discussed in last slide that up to 90 days a person is allowed to submit the claims. So up to 90 days अगर आ रहे हैं, you may be required to amend your list of claims. And in case a financial creditor comes in, so in case a financial creditor comes in, that will also form part of this committee of creditors, which was formed at the time of earlier that 30 days timeline. तो अगर कोई financial creditor बाद में claim लेके आता है, then also he can be admitted, but it will not invalidate the decisions which has been taken before admission of that financial creditor. Mr. Salman is saying that can RP act as forensic auditor? No, sir. RP cannot be a forensic auditor. One thing which RP can do, that he can say that I do not see an opportunity or I do not see a prospect of appointing a transaction auditor, and he himself can form an opinion on the types of these 4 transactions, and in that case he will not appoint any forensic or transaction auditor. But in case he appoints any person, then that person should be unrelated. Also, he cannot appoint any person, any firm which has any type of relation to financial creditor or resolution professional himself or corporate debtor. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जैसा कि मैंने ब्रीफ आउट किया था.
So information memorandum covers all these type of details and informations which were required. Assets and liabilities of the company, because कोई भी person अगर prospective buyer comes in, so he will require the details of assets and liabilities in order to bid for the same. In order to bid for any company, I will require the details of assets and liabilities, क्या उसके अंदर है, in order to carry out, क्या मुझे going concern चलाना है, क्या कोई ऐसी asset है for which I can bid, मुझे कितना amount pay करना होगा, कौन से financial creditors, operational creditors involved हैं, कितने amount के अंदर ये company settle हो सकती है. तो in order to frame a criteria about this, I will need assets and liabilities. So information memorandum, being a basic document, firstly covers assets and liabilities. Further, I have already discussed that it will cover audited financial statements for last 2 financial years, provisional financial statements till the date of commencement of CIRP. क्योंकि CIRP in between the year भी हो सकती है, जैसे कि मेरा अभी एक केस आया 24 जुलाई को, तो I requested suspended management to hand over the company on the date of commencement of CIRP. So from 1st of April 2021 to 24th of July 2021, 2020 I would say, because 21 has just started. So it is like the 24th July को अगर मेरा case है, तो for that 3.5 months I will require those financial statements in order to get an idea of as on date picture. Also list of creditors, जैसा कि I have already discussed the claims and everything, debts due to and from related parties. So in order to have an idea regarding whoever is, क्योंकि unsecured financial creditors कभी-कभी related parties भी हो सकते हैं. So in order to have a basic picture, IBC says that related parties are not allowed to vote. So for carrying out the process further and for getting a better idea, we need to have an information regarding related and unrelated parties. Then details of guarantees I have already discussed. Members holding at least 1% stake, because these are the major stakeholders जिन्हें हमें आगे जाके pay करना होगा. So we need every, in case 1000 shareholders हैं जिनके पास भी 1% stake है, कुछ भी है, तो we need to disclose name of each and every person in this document. कोई material ongoing litigations हैं. One thing I would clarify that section 14 है जो कि moratorium declare करता है for a CIRP initiating company. So at that time all the litigation gets stayed. Stay तो हो जाएंगे, but in all for having an idea of all the litigations which were at all running, because there may be a case that a financial creditor has run a case under DRT also. मतलब पहले, because prior to 2016 we were not having this whole procedure. So in all the cases which were there prior to 16, there may be cases which for which application has been filed under SURFACE, DRT में cases चल रहे हैं. तो all those litigations, all those, कुछ ऐसा हो सकता है कि quality के लिए, मतलब कुछ भी operational creditor ने लगाया है, supply of services का कोई litigation running है, government departments के litigations running है, क्योंकि आजकल जो भी अगर कोई default कर रहा है financial उस पे भी, so that NPA account may be having ongoing litigations for GST, income tax. So all those are required to be disclosed here. And all I have already discussed regarding the number of workers and employees which are there on the date of CIRP commencement. This is the opinion which is required to be framed under transaction audit, preferential transactions under section 43, undervalued transactions under section 45, extortionate transactions under section 50, and fraudulent transactions under section 66. I've already given a brief view of that. Preferential transactions वो होते हैं जहाँ मैंने किसी को, corporate debtor ने किसी को preference दिया है to carry out a normal course of business के अंदर particular किसी person को preference दिया गया है, तो last 2 years के preferential transactions will be covered under transaction audit. Further, undervalued transactions I have already given an example.
So that will also be for last 2 years. Extortionate transactions जहाँ पे कि मुझे 2 रुपए देने थे और मैंने 5 रुपए में काम करवाया है. So that will also be for last 2 years. Further, fraudulent transactions, this is something which is without any time limit. मतलब कि अगर last 8 years में भी कोई ऐसा transaction मेरे opinion में आता है which has given this corporate debtor backside, मतलब कि जहां जाकर due to that transaction corporate debtor was paid or placed at some position which was unfavorable to that company. So all those fraudulent transactions will be covered under section 66 and transaction auditor will be required to frame opinion on the same. रिसेंट जो हमारे केस था उस केस में हमने promoters के खिलाफ we have filed a IE for this fraudulent transaction. We have established some fraudulent transactions and हमने उसकी personal contribution उसमें sort किया है एक बहुत बड़ा amount के लिए, because there we were able to establish that some diversion of funds were happened in their personal or group companies. तो हमने उसको identify, court has accepted it और recovery proceedings are going on. So ये इतना sound law है कि if there is some divergence, fraudulent divergence, bad intention divergence, then RP is authorized. उसको इतना powerful किया गया RP को कि he can file a IA before honorable NCLT and after admission recovery proceedings can be initiated. I have one question here. Mr. Nahid is saying, can decision of not appointing FA be challenged? Sir, see, these all agencies are supporting services, supporting to the process of CIRP, which is the primary responsibility is of RP. So अगर RP को लगता है कि जरूरत नहीं है मुझे करने की, तो ठीक है आप मत करिए, but it doesn't mean कि आपने appoint नहीं किया है, तो you will not establish those transactions, those fraudulent transaction, undervalue transaction, extraordinary transaction, and preferential transaction. It is your duty. So those forensic auditor agencies are facilitating to your responsibility. So if you think that okay, I am able to do this, then definitely you can do. And one thing I would add here, that every such decision, that is appointment of forensic auditor or transaction auditor or not appointment, that will always be taken with the permission of committee of creditors, because after appointment, after constitution of committee of creditors, सारे decisions majority से लिए जाते हैं. RP does not have any power to act on his own behalf. कोई भी transaction, चाहे वो registered valuers तो appoint करना is a necessity for RP, but in that case also quotations will be invited, it will be put before a committee of creditors and then appointment will be carried out. So for every transaction, every act which is carried out by insolvency professional, there has to be a ratification and backing of committee of creditors. Everything will be ratified and approved by committee of creditors. After this preparation of information memorandum and appointment of transaction auditor, RP is required to frame and deliver a expression of interest. Expression of interest क्या होता है? जैसे होता है कि I have gathered all the information regarding the company. Now I will put this company for sale. तो मुझे अगर उस कंपनी को सेल पे डालना है तो I would advertise. I would prepare a form G. Form G will give all the timelines. कितने दिन में आपको, जैसे एक टेंडरिंग का प्रोसेस होता है ना, we all apply for tendering process for banks and everything. तो there is a process that 10 days में आपको आपके KYC सबमिट करने हैं, 5 days के अंदर हम लिस्ट निकालेंगे कि अप्रूव्ड है, कि प्रोविजनल लिस्ट निकालेंगे, कोई नेक्स्ट 5 days में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो नेक्स्ट 5 days में विल गिव अ फाइनल लिस्ट फॉर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. जब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की फाइनल लिस्ट आ जाती है तो वी विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन टू देम.
कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो हमने बनाया है, देन वी विल शेयर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, क्योंकि कोई भी पर्सन को जज करने के लिए कि दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बी अ पर्सन हु कैन रन दिस कंपनी फर्दर, तो उसके लिए वी विल सेट सम क्राइटेरिया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव जैसे कि उसका जो एग्जिस्टिंग क्या टेन्योर है, उसका एग्जिस्टिंग कितना नेटवर्थ होना चाहिए, what should be the existing turnover criteria, all this will be the quantitative. Qualitative like uska projections kaisa hai, how will they run the company, how will they give the amount to financial creditors, operational creditors, so everything will be defined in that evaluation matrix. Further request for resolution plan banta hai, it is a whole 100-page document जो एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट, एक जैसे हम एक टेंडर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसके अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड कि किस तरीके से ये प्रोसेस बढ़ेगा, कैसे दिस होल पर्सन्स विल बी क्राइटेरिया कि हाउ दिस कितना टाइमलाइन होगा, कौन प्रोसेस में हो सकता है, कितने पर्सन्स आ सकते हैं, हाउ कैन अ कंसोर्टियम बी फॉर्म्ड एंड एवरीथिंग, it will be covered in this request for resolution plan document. After that, a resolution plan will be invited, which has a 30 days timeline for that. And after getting, हो सकता है I have, जैसे मेरा अभी एक केस था जिसके अंदर I had 3 resolution applicants. तीनों के resolution plans आए, we evaluated, we prepared a evaluation matrix, then it was voted upon by committee of creditors, and after getting voted upon, one resolution plan was approved. For getting a resolution plan approved, we need a 66% majority to vote on this. And after getting 66% majority voting, it will be submitted to adjudicating authority, that is Honorable NCLT for that region. And after submission, adjudicating authority has a power to approve or reject that resolution plan. So this is a basic regarding CIRP. Any questions or we should move? So, see, the whole IBC proceedings, as a chartered accountant professional, we need to take decision as a businessman. You know, because we need to run the businesses. What if it is in going concern? जैसे एक अभी हमारे पास केस जो चल रहा है, वो going concern है और इतना बड़ा है, तो we have appointed so many professionals and we are making sure that the plant industry is to maintain the status of going concern. We are dealing with the raw material suppliers. We are purchasing raw material, placing orders. Then we are manufacturing some goods. Then we are definitely we are dispatching them and selling them. So as a businessman, you have to think, क्योंकि आपको पूरा business चलाना है. और promoters कभी भी रेडी बैठे हैं कि आपके खिलाफ कुछ भी कंप्लेन करने के लिए कि सर इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली द इफेक्टेड पार्टी इज वेरी फर्स्ट इफेक्टेड पार्टी इज प्रमोटर्स. तो आपको सारे जो डिसीजन है वेरी रेशनल विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स केयरफुली with due compliance with due all procedures, documentation is very important in this. So ये सारी चीजें we need to take care. But definitely अगर आपने रेशनली काम किया है, अच्छे से काम किया है, तो कोई उसमें आपको डरने की भी जरूरत नहीं है. अभी हमारे खिलाफ भी काफी सारे हम लोगों ने प्रेजेंटली वी आर हैंडलिंग मोर देन 15,000 crore पोर्टफोलियो अंडर दिस रिजीम. सो नंबर ऑफ लिटिगेशंस आर गोइंग ऑन. बट ठीक है, कहीं कोई आपका इंस्टीट्यूट में कंप्लेन कर देगा, कभी कोई आईबीपीआई में कर देगा, बट इफ यू आर राइट, यू हैव डॉक्यूमेंट्स, यू कैन प्रूव इट, एंड देयर इज नथिंग टू वरी. सो जब ये इंडिविजुअल पे चालू हो जाएगा, जब इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पे, जो कि पार्ट 3 मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया था, पार्ट 3 अभी स्टिल इट इज नॉट एप्लीकेबल, ऑल्दो रूल्स रेगुलेशन सारे सब कुछ एक्ट में आ चुके हैं, बट जैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी तो आपका बिजनेस जो है 4-fold बढ़ जाने वाला है आईपीएस का और जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों का. सो one thing I would also add that only reason of not getting this person insolvency notified is the lack of extra. So we don't have so much insolvency
carry out the whole process. And judiciary and Yes, everything. Because in order to cater to a individual need, the अगर 1,000 rupees का भी default है, and you are in a position to initiate the insolvency resolution process. You can just think of the business which is coming in. हाँ मैडम सही कह रहे हैं, जैसे जो काफी सारी एंट्रीज, मतलब मैं लीगली नहीं बोल रहा हूँ, बट काफी अनसिक्योर्ड लोन एज ए एंट्रीज जो कंसेप्ट है मुंबई और बहुत सारी जगह पे, तो अगर आप आईबीसी के रिजीम में आ जाते हैं इंडिविजुअल एंट्रीज भी, तो एनीबडी कैन डिमांड है। एक मेरे केस में हुआ था, प्रोमोटर्स कंपनी ने 2 करोड़ रुपीस की एंट्रीज ले रखी थी, एक्चुअली में उसको नहीं देना था, बट उसने आईबीसी का केस फाइल किया, तो उसको सेटलमेंट के लिए आना पड़ा, अभी तो सेटल करे इसको। तो ये सारी टैक्टिक्स भी फ्यूचर में हो सकती है। सो यहाँ पे जो बिजनेस, जो हमारी कंसल्टिंग है हमारे कस्टमर्स को, उनको भी हमें इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए, आईबीसी के बारे में, कि भाई ये अगर कुछ इस तरह का है उनकी बैलेंस शीट में, तो उस चीज को बहुत जल्दी से उनको रिफ्रेम करना चाहिए। Mr. Nahid is saying, what is the role of home buyers in the process? Actually, sir, home buyers, जैसे कि आपने अभी, क्योंकि काफी उसमें थे वो home buyers, वो होते हैं जैसे कि flat in some this residential apartment. So, in case I have booked a flat in residential apartment, क्या मैं हो सकता है ना कि जैसे हम डायरीज बनाते हैं, we give some advance, but that home has not been allocated in my name still, and the company which was constructing all the structure has moved into insolvency because it has not paid its dues to financial creditors. अब एक financial creditor has initiated a process, और home buyers कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं home buyers। तो इन द 100 फ्लैट्स अगर एक कंसर्न में भी हैं और किसी को 2 के नाम पे फ्लैट हुआ है बट 98 आर स्टिल पेंडिंग, तो they do not own the flat, so they don't have title to that, but they have given the advance. That category is a class of creditors, that is home buyers. और उन होम बायर्स के लिए, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पहले भी था कि व्हाट आर दीज ARs, authorized representative. Authorized representative टर्म तभी आई जब होम बायर्स वाला केस आया JAL का, तो अथोराइज, क्योंकि जब अगर 100 लोग तो एक में हैं, अगर इन केस आई नीड टू ऑर्गेनाइज अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो मुझे एक हॉल बुक करना पड़ेगा in order to accommodate these 100 people. So that concept of authorized representative was introduced, कि एक person can be authorized representative for this whole class of home buyers and they will be classified as financial creditors. और जैसा रोल financial creditors का होता है, voting and everything, that will also be given to them. तो एक जो authorized representative होगा, that authorized representative will act on behalf of those home buyers, and that authorized representative will vote, will take care of all the decisions, will participate in the committee of creditors meeting, and will give his views, voting, everything, decisions which are to be taken off on behalf of those home buyers. So I think I've catered to both the questions, home buyers and the authorized representatives. इसके बाद जो प्रोसेस है आफ्टर CIRP, it is a detailed process of 180 days. In case a CIRP fails, तो any resolution professional will move into liquidation of the concern. And liquidation काफी लंबा प्रोसेस है. I've already covered these timelines for insolvency resolution process. लिक्विडेशन जो होता है, इन केस प्लान इज नॉट रिसीव्ड, COC अग्री नहीं करती है रिजोल्यूशन प्लान को, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है, तो लिक्विडेशन विल बी मूव्ड इनटू RP will be appointed as liquidator or new person can be appointed as liquidator.
वही पूरा प्रोसेस होगा. आई विल आइडेंटिफाई द लिक्विडेशन एस्टेट, कितनी असेट्स हैं मेरे पास जिनको सेल करके कितने लोगों को मुझे पे करना है. कलेक्शन ऑफ क्लेम्स रहेगा. 30 days are given to liquidator to collect the claim and 30 days for verification. So all these processes will be carried out in 60 days. उसके बाद में जैसे we were framing a committee of creditors there, we will frame a stakeholder consultation committee. वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते थे, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं. सो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट क्रेडिटर्स, होम बायर, एनी अदर क्लास, ऑल एम्प्लॉइज, ऑल दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ. यहाँ पे जो वोटिंग होगी, ऑलरेडी क्या होता है कि सीआईआरपी में here decisions are taken by liquidator. Only he needs to consult the stakeholders for certain decisions like. Vinita ji, your voice is cracking again. Okay. Only some decisions are taken with the consultation of stakeholders, like manner of sale कि किस तरीके से I would be going to auction this company. जैसा कि Pradeep sir has already said, there are 6 type of sale processes which are defined. कि collective manner में as a going concern हो सकता है, the whole concern is a going concern, or the business is a going concern, or all assets collectively, or a type of asset, or a parcel of asset, or a slump sale. These are the manner of sale, and decision is to be taken by liquidator which way he will go. Then overall objective to maximize. Yeah, overall objective will be to maximize the value of which is being collected and given for the creditors and distributed to the financial creditors or operational creditors. Here we have a criteria and we have a waterfall mechanism under section 53 which defines कि पहले किसे पे होगा. Resolution plan के अलग criteria थे, but here we have a criteria कि पहले secured financial creditors पे होते हैं in case they relinquish their security in liquidation estate. So it will be given the priority along with the wages for last 24 months. And after that only the assets will be catered to for other type of financial creditors. And after a whole distribution, it will be, this liquidator will apply to Honorable Adjudicating Authority for dissolution, and NCLT will pass an order for dissolving, and the copy of order will be shared to Registrar of Companies within 7 days in order to strike off the name of the company from the register. लिक्विडेशन भी अपने आप में सर पूरा एक 2-3 आवर्स का सेमिनार इसके लिए पूरा हो सकता है, बट इन शॉर्ट बिकॉज टाइम जो है अभी ऑलरेडी 6:15 तक का हमको दिया गया था. So in brief, the madam has explained the liquidation process, and I think now we may open this session for the question answers. Agar if anything, any question is there, then we would love to address that. So we request members, either they can type on the chat box, or Murtaja ji. Yeah, Pradeep ji, Vinita ji. Very nice coverage, and yeah, we'll some questions are covered during the session itself. And members, if there are any more questions, please put it on the chat. Yeah, there is one from C. Shabir Bhai Motorwala. How are the fees of LP decided? Any stipulation in law? No, sir. Law is not defining any criteria for the fees. It is only for it is the commercial market-driven mechanism and commercial wisdom of financial creditors. Okay. So the same way where you take 20,000 from one client for audits, and you take 40,000 from another one for the same type of business and same size. So it's always negotiable. It depends upon the terms and condition with particular financial creditor.
and it can be negotiated afterwards also if it is very higher. So try to give more use value. What is our concept is, sir, that we always try to give more use value of our client. We don't see, we always take money as a by product. हम अगर काम करेंगे तो अगला पैसा देने वाला ही है. So अगर हमने समझिए कोई एक महीने कम फीस में काम किया या ज्यादा फीस में काम किया, तो उसको पता लग जाएगा कि he is charging more or he is charging less. So we always focus on our work and money we take as a by product. और हमें लगता है कि सबको इसी तरह अगर हम काम करें तो ठीक है, एक आध काम में हम लोग कम ज्यादा ले सकते हैं, but next time it will be compensated. So yeah, follow-up question is there by Shabir by Motorwell itself. Can time-based fees be charged? So based on hours or days? Yeah. Monthly. Normally it is monthly basis. Monthly we quote on monthly basis, but definitely the monthly assessment of our fees, we calculate that how much time we are investing in that assignment, what are the resources we are deputing. So according to that, we derive a monthly figure. Okay. There's another question by C.A. Salman Sakarwala on fees itself. Can fees be based on percentage, certain percentage of the work done or assets liquidated? Or will there be a violation of a CA code of ethics in this? In case of the CIFB, no, it is not on the percentage basis. But yeah, definitely in the liquidation, there is a percentage chart prescribed by the itself by the IBBI. Regulation itself gives a percentage chart of asset realization and distribution. So it will be carried out. Our fees is governed by that regulation, and that it is very well prescribed on the percentage basis of the realization value. Fine. Another question by CN Nahid Bhujwala. So don't you think the process is misutilized by management by putting a claim so that all other amnesty is received? So once it is an IBC insolvency, there's amnesty from other laws. So is it being misutilized by people? सर देखिए, हर चीज का यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन होता है. सो ये आज नहीं, हजारों सालों से होता है, आप समझिए. सो हो सकता है कि कोई इसका कर रहा हो, बट डेफिनेटली अगर डाइवर्जेंस है, अगर किसी ने जानबूझ के ये अगर लगाया और उसका इंटेंशन, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रूव, देन देयर आर हार्श प्रोविजंस इन द कोड, वेरी वेल प्रिस्क्राइब्ड. All the offenses and penalties are there. Even it gives 5 years imprisonment for the responsible person. Fine. Another question by Ms. Nisha Gupta. She's a member of Board of Studies, ICI. His limitation is having retrospective effect. Yes. Yes, Nisha Gupta ji, we welcome you, madam. It is having a retrospective effect that in case a date of default is prior to 3 years, जैसे कि if I am filing application in 2021 and the date of default was 2013, so NCLT will not allow me to file. NCLT will not get this application admitted due to limitation. Yeah. Financial creditor. So limitation act is applicable here. From the date of default, we need to check the limitation act, and accordingly, once means if accordingly our decision will be, we can take our decision for filing of an application or not. Okay, fine. Another question by CA Shabir by Motorwala. Does law give any protection to LP for any decision taken in good faith, though not fully correct? RP, okay, RP, LP, no, RP it is. Yeah. Any protection to RP? Yeah, RP is always protected because see, RP, we are representing court. We are person of the court. And if anything, any action which is performed by the RP with due course, within due course, and with all the permissions of committee of creditors. Yeah. Then nobody can, then his part cannot be challenged in that. Okay, another question. PPT will be shared. Yes, that will be shared. Yes, definitely. Sure. Sure. And one thing, जो मुर्तजा सर को भी हमने बताई थी. Right now we are at our hometown. Basically, कोई function के लिए हम लोग आए थे. But see the technological advantage कि हम लोग यहाँ से भी हमारी PPT present कर पा रहे हैं.
सो मेरा ये जन्म स्थान है जहाँ पे मैं अभी हूँ और उस रूम से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सर. Yes. So nice. Thank you. Yes, sir. Yeah. Any other questions, members? You can put it on the chat box or unmute and tell yourself as well. Yeah. Speak it out. Yeah. We'll just wait for 2 more minutes, and if there's no more questions, we'll end the session. Yeah, and meanwhile, I'll just announce to the members of Baikala CP Study Circle, we need energetic members to come in the committee and take up charge for organizing seminars and workshops, different CP meetings. So all those who are interested in being a part of the committee, please let us know. Let me or Abdul Hussain Bhai know. And we'll be sending a formal invitation email as well. So you can reply to that as well, or you can connect with us anytime. And if there are any suggestions also for upcoming programs, please do let us know. Yeah. मुर्तजा जी काफी एक्टिव लग रहे हैं यहाँ एज ए कन्वीनर एंड अच्छा सर आपने आज मैनेज किया है. Yeah, thank you. So yeah, thank you Pradeep ji, Vinita ji for this wonderful coverage. Yeah. And of course, very nicely given the opportunities as well as IBC very nicely covered. And as a formal vote of thanks, I would request CA Maria Kolorwada to please come and give well-deserved vote of thanks. Hello everyone. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks. I would like to thank Pradeep Kabra sir and Vinita ma'am for sparing their valuable time. We all have indeed had an extremely useful day. I'm sure everyone would agree that we have learned a great deal and are very much indebted to both our speakers for having discussed with us the opportunities in this field. Like Pradeep Kabra sir rightly said, opportunity is like a rising sun. If you wait too long, it is gone. So thank you very much, sir and ma'am, for your valuable time and for sharing with us these valuable details on the session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you all. I'll end the session. Thank you.